We have also seen this basic spectroscopy, that is what is wavelength, what is wave number, how to calculate the energy of wavelength, energy of particular wave, what is meant by frequency. We have seen this. Then electromagnetic spectrum we have seen. We have seen what is polychromatic light and what is monochromatic light, because these two terms they may. Polychromatic means poly means lot, poly means many, chroma means color. Polychromatic light will have different rays or different light of different wavelength. Monochromatic means will have only single wavelength light. So prism convert or prism disperse the polychromatic light into monochromatic light. Prisms are there, then gratings are there. We have also seen this part, physical properties used in the pharmaceutical analysis. Absorption, radiation, okay, absorption, radiation, scattering, emission, different property measured. We have seen this also. What is atom? Different kind of spectroscopy. We have seen this. We have also seen types of spectroscopy or classification of spectroscopy. We have also seen this. Okay, we have also seen this. We have also started our colorimetry. We have finished that colorimetry theory of spectroscopy. Okay, excitation means what? Relaxation means what? We have seen what is meant by excited state, what is meant by ground state. We have seen this. How there is a relaxation process, the mechanism of relaxation also. In Beard's numbers law, both combined law we have seen. We have seen the colorimeter, parts of colorimeter, different kind of filters, monochromators and detectors. By sampling cell and detectors, we have seen this. Then after that, applications was there. We have also seen the applications of this colorimetry. So remember the colorimetry, the compound may be either colored or colorless. जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक तो वो कलर्ड कंपाउंड होगा या फिर कलरलेस कंपाउंड, ठीक है. So if it is a colored compound, so you cannot, if it is a colored compound, then you can use colorimetry or colorimetry to quantize that organic compound. If you want to know the quantity, if you want to know the quality of that organic compound, quantity of the organic compound, and if it is colored, अगर colored substance है तो उसमें colorimetry में जाएंगे. If your substance is colorless, so it can absorb the radiation less than intensity of less than wavelength of less intensity or less wavelength than visible light. So if it is a transferred material, that means that doesn't mean it will not absorb any kind of rays. It will absorb. Okay, it will absorb UV rays. So UV spectroscopy deals with the absorption spectrum in a range of 400 to, it deals with the absorption spectrum of 200 to 400. Normally we call it is a UV spectrum. UV spectrum किसको बोलेंगे? 200 to 400 नैनोमीटर. नॉर्मली बोलते समय अपन 2 से 200 to 400 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली while in the UV spectrophotometer, तो UV जो होता है आपका UV spectrophotometer, so it scans the sample from 400 to 200 nanometer. It scans in a reverse direction. Normally we can say that the spectrum ranges from 200 to 400 nanometer, but actually it is 400 to 200 now. उल्टा होता है. Now what is UV? It is also known as electronic excitation spectroscopy. Remember name, electronic excitation spectroscopy. UV spectroscopy is also called as electronic excitation spectroscopy because this UV spectroscopy involves the promotion of different type of electron from their ground state to spectroscopy involves the promotion of different types of electron. There are different types of electrons present in the molecule, like sigma electrons, then pi electrons, then n electrons. If there is a carbon-carbon single bond, that is known as a sigma bond. Okay. If there is a carbon-carbon double bond, that is known as a pi bond. Okay. It is known as pi bond. And if there is a compound like, for example, NO2. So in the NO2 molecule, that lone pair of electron is there. So that is known as a non-bonding electrons. So there are different kind of electrons present in the molecule. Molecule में क्या होता है कि टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मींस सिग्मा बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस पाई बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एन इलेक्ट्रॉन्स. एन इलेक्ट्रॉन्स और एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे SO2 है आपका फंक्शनल ग्रुप है SO2, ठीक है. OH है अल्कोहल ग्रुप है OH, तो उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स or non-bonding electrons. So n electron. There are basically three kind of electrons in the molecule: sigma electrons, pi electrons, and n electrons. Now this UV spectroscopy deals with the electronic level. So excitation of molecule or changes in the electronic energy of molecule. That is
studied in the UV spectroscopy. Okay, so it is also known as electronic excitation spectroscopy. Why? Because as it promotes the different type of electron in the molecule from their lower energy state to higher energy state. It promotes the different type of electron to their higher energy state from the ground state. Okay, we have seen what is meant by ground state, what do you mean by excited state. तो ग्राउंड स्टेट मीन्स व्हाट ग्राउंड स्टेट मीन्स जो मॉलिक्यूल का रेस्टिंग स्टेट होता है रेस्टिंग स्टेट मतलब क्या रेस्टिंग मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं होता है ओके एनर्जी उसका मिनिमम मिनिमम होता है so in the resting state molecule will have minimum energy and maximum stability but in case of okay but in case for example if there is an absorption of radiation by the molecule like UV radiation by the molecule that ground state molecule will take energy from the UV rays and will go in an excited state will go in the excited state now excited state में जाने के बाद so that molecule gain the energy from UV rays and goes into excited so that molecule has now more energy so excited state will have more energy and less stability okay so again जैसे एक्साइटेशन होता है कुछ टाइम के लिए मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में रहता है वी हैव सीन दैट टाइम दैट इज 10⁻⁸ to 10⁻⁹ second so only for a minor period molecule remains in the excited state and again it comes to ground state जैसे मॉलिक्यूल एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाता है वैसे ही एनर्जी छोड़ के ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी छोड़ने के कुछ कुछ मैकेनिज्म होते हैं ओके सो व्हेन देयर इज अ ओके so promotion of molecule from promotion of electrons high lower energy level to the higher energy level is known as excitation these electrons after spending some time in a excited state they loses the energy they lost energy and comes to again lower energy state by emitting the radiation by emitting the heat etc we have seen that mechanism so excitation of molecule from lower energy state to higher energy state known as a excitation and when excited molecule comes in a ground state known as a relaxation process we have seen that okay so this UV spectroscopy deals with the electronic excitation of the molecule and the UV spectroscopy what is the range 200 to 400 nanometer and this UV spectroscopy is useful in the measurement of conjugated system present in your substance conjugated system present in your molecule so it measures the double bonds aromatic conjugation in the various molecule so UV spectroscopy क्या है basically it is a also known as a electronic excitation spectroscopy याद रखो इसको electronic excitation spectroscopy electronic excitation मतलब क्या है so type of electron present in the molecule they will be excited तो उतने कितने मॉलिक्यूल होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं so there are sigma electrons known as a bonding electrons pi electrons known as a bonding electrons and n type of electron they are known as a non bonding electrons तो जैसे होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड्स ओके एंड अगर CH2OH स्ट्रक्चर है मतलब मिथेनॉल तो OH जो है OH उसके ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा दैट इज नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स okay so there are three kind of electron present in the basically in the molecule sigma electrons pi electrons and non-bonding electrons so after the absorption of UV rays so these electrons they goes from lower energy state to higher energy state means from ground state to excited state by absorbing the UV radiation okay these electrons they promoted into excited state that is a higher energy level state by absorbing the energy from UV radiation okay now that energy is measured in the UV spectroscopy and that is useful in the that UV spectroscopy will give you information regarding the conjugation present in the system or different kind of double bonds present in the system so UV spectroscopy that is the introduction UV spectroscopy also distinguish between conjugated and unconjugated system conjugated system क्या होता है कि conjugated मतलब क्या है जैसे डबल बॉन्ड्स कार्बन यहाँ पे कार्बन और एक डबल बॉन्ड conjugated system means what conjugated system means double bond system okay so UV spectroscopy also distinguish between conjugated and unconjugated system that is alpha beta unsaturated carbonyl compound from beta gamma analog it also distinguish between homoannular and heteroannular dienes okay and other conjugated dienes in UV visible spectroscopy
only valence electron that absorb the energy, and their absorption characteristic depends on the nature of electron present. कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 types के, sigma electron, pi electron and n electron. Now absorption law we have already seen what is meant by Beer's law, what is meant by Lambert's law. Lambert's law is related with the thickness of medium or path length. Remember we have seen it. When a beam of monochromatic light passes through a homogeneous absorption medium, the rate in the decrease in the intensity of incident light increases with the thickness of absorbing medium, because it is proportional to the, okay, so it is proportional to the thickness of medium. So that is a Lambert's law. Lambert क्या कहता है कि intensity of decrease in the intensity of incident radiation, जो रेडिएशन आपने रेडिएशन पास किया सैंपल में से, उसका जो इंटेंसिटी वो कम हो रहा है. Okay, decrease in the intensity of incident radiation increases, okay, increases with the increasing the path length, that is thickness of medium. So मतलब decrease in the intensity of incident radiation is proportional to the path length, ऐसा कहना है लंबार्ड का. We have seen this law in the last session. Okay, di upon dx, di मतलब decrease, okay, I मतलब intensity of light, incident light, and okay, and x di upon dx is equal to ki. K is the constant and I is the initial intensity. So decrease in the intensity of light is proportional to the thickness of absorbing medium. Thickness means path length. Now Beer's law, when a beam of monochromatic light is passed through a solution of an absorbing substance, the rate of decrease in the intensity of radiation with the thickness of medium is proportional to the intensity of radiation as well as concentration of solution. Okay, so concentration of solution. So Beer's law is related with the concentration of solution, and Lambert's law is related with the thickness of medium. We have seen in the last session also, so there is no need to repeat it again. Ti upon dx is okay, I see. So derivation. Deviations of Beer's and Lambert law. We have already seen this point also. Deviations of Beer's and Lambert law in the last session. Different forms of equilibrium as a ketoenol. तो कीटोइनल फॉर्म जो होता है कंपाउंड का, सो कीटोइनल फॉर्म, कीटो फॉर्म जो है कंपाउंड का, दैट विल एब्सॉर्ब टू ए लॉन्गर वेवलेंथ एंड इनॉल फॉर्म विल एब्सॉर्ब टू ए शॉर्टर वेवलेंथ. जहाँ पे डबल बॉन्ड है लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्सॉर्ब करेगा and enol form shorter wavelength. Different forms in equilibrium as ketoenol tautomers. So they also does not obey the fluorescent compound if present in the sample. It will then Beer's law is not applicable. Formation of solute or solvent complexes through some sort of association, dissociation, complexation, etc. etc. We have also seen that. At that time also Beer's law is not applicable. Beer's law is applicable only a particular range of concentration. So if concentration range is there in between this 10 to 50 microgram per ml, then only Beer's law is applicable. So beyond this 50 microgram per ml, Beer's law is not applicable. मतलब क्या? Normally मैंने कल explain किया है ये सब चीज. Okay? So if you plot a graph of absorbance versus, okay, absorbance versus concentration. मान लीजिए कि ग्राफ आपने बनाया absorbance versus concentration. So if there is a straight line, that means if there is a straight line, that means there is a, okay, there is a Beer's law is obeyed. If there is a not a straight line, that means Beer's law is not obeyed. Okay, so particular concentration range में ही Beer's law applicable है. That is a 10 to 20 microgram per ml. Okay, different type of transition in the electron of the molecule. कि molecule के electrons जो होते हैं उसमें कितने type के transition होते हैं? Different type of transition in the. Now there are three kind of electrons present in the molecule as I have told you. So first kind of electron is known as sigma electrons. Sigma electrons, they are known as a bonding electrons, because sigma electrons are found in the bond. So sigma bond होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? sigma electrons. Then again pi electrons are there, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, conjugation होगा वहाँ पे. Okay, carbon carbon single bond, जैसे for example you can see in this first molecule. So here carbon CH3 CH2 CH2 CH3. So here is only sigma bond. So sigma type of electrons are there in this molecule. Pi bond or pi electrons also are known as a bonding electrons. Okay, so for example जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, for example in these two compound, okay, here there is a double bond as well as triple bond, okay, double bond or triple bond. So this in these bonds they are pi electrons. Okay, so पहले कंपाउंड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सेकंड कंपाउंड में है पाई इलेक्ट्रॉन,
एंड थर्ड कंपाउंड जो है फॉर एग्जांपल यहाँ CH3OH मिथेनॉल। सो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली देयर आर थ्री काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। ये तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। नाउ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन दे आर नोन एज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब एन इलेक्ट्रॉन जो है they are not involved in the bond formation. Sigma electrons they are involved in the bond formation. Pi electrons they are involved in the bond formation. N electrons they are not involved in the bond formation. After the absorption of radiation, there is a energy from radiation. So these sigma, pi or n bond at in the molecule they are in a ground state. Okay. So after absorption of this energy, they are converted into excited state. So for example, sigma to sigma star, sigma electron will be excited and it is converted into another state known as excited state, sigma star, which is having anti-bonding property. Sigma star जो है वो anti-bonding electrons. Now pi, okay, so pi bond, pi electrons will be again, pi electrons will also be, okay, pi electrons also be excited, that is a pi to pi star. Pi electrons will be excited into pi star. Pi star is also known as a anti-bonding electrons, pi star, because they are having more energy. And then n bonding, n2, okay, n जो electron है, their transition takes place like n to pi star. n bonding electron जो है non bonding electron, वो pi electron n to pi star transition करते हैं, then n to sigma star भी transition करते हैं, ठीक है, n to sigma star, n to sigma star, n to sigma star. So याद रखो यहाँ पे there are three type of electrons: sigma electrons, pi electrons and n electrons. These electrons present in the molecule, okay, at a ground state. Ground मतलब less energy state, lower energy state. Now these are at a lower energy state, and that's why they are known as a highly occupied molecular orbital, HOMO, HOMO, highly occupied molecular orbitals. They are a HOMO, and this after excitation they convert into highest energy state level. At this time in the molecule they are at a lowest energy state level, known as a HOMO. Okay, HOMO means highly occupied molecular orbital state, and they are converted into excited state, that is a higher energy state level after absorption of radiation, and known as a LUMO. LOMO, LOMO. LOMO means lowest occupied molecular orbital, LOMO. So HOMO and LOMO. HOMO means bonding रहता है उसमें, HOMO means lowest energy state, LOMO means highest energy state. Now there are different type of transition in the electrons, like n electrons. Okay, now you might know sigma type of bond is strongest. Okay, यहाँ पे क्या है, strong bond होता है, energy required to break or to excite the sigma electrons is higher. Okay, highest energy लगता है इसको excite करने के लिए. Okay, okay, lowest energy लगता है to excite the n electron. So lowest energy is required to excite the n electron, and in between, after that lowest energy for n electron, after that little bit more energy required to excite the pi electrons, and highest energy is required to excite the sigma electrons. Okay, you might know this. Now there are different kind of transition in the molecule. इसके ऊपर questions आते हैं, इसलिए I have to explain this. So n to pi star, first is n to pi star, first transition is n to pi star. Now this requires lowest energy. ठीक है, यहाँ पे देखो इतना इतना ही एनर्जी लगता है, n to pi star को सबसे कम एनर्जी लगता है. So lowest energy is required to this type of transition, n to pi star transition. They requires the lowest energy. After that pi to pi star, pi to pi star, this transition requires more energy than n to pi star. Okay, now n to sigma star, so n to sigma star again they requires more energy than pi to pi star. Then after that pi to sigma star, they require more energy again then. Okay, then sigma to pi star, transition, and highest energy is required for sigma to sigma star transition. यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसके ट्रांजिशन के लिए कितना एनर्जी लगता है. सो याद रखो लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर n to pi star, after that pi to pi star, after that pi to sigma star. ओके, आफ्टर दैट सिग्मा टू सिग्मा स्टार. बस इतने चार ही ट्रांजिशन आप याद रखो, बाकी के यूजलेस है.
N to pi star. So non-bonding electron will be excited to pi star electron known as a N to pi star transition, and it requires lowest energy. Now this kind of transitions they are found in the carbonyl compound C double bond O. Carbonyl compound जहाँ पे ester वगैरह carbonyl compound acid carbonyl compound तो उसमें N to pi star transition होता है. Now pi to pi star transition जहाँ पे double bonds होते हैं जैसे ये इन दोनों में pi to pi star transition होगा. Okay? So N to pi star transition require lowest energy. After that pi to pi star. Okay? Okay, after that pi to sigma star, and highest energy is required to excite the sigma to sigma star. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, याद रखो. वी आर गोइंग टू सी इट अगेन, डोंट वरी, इन अपकमिंग स्लाइड. तो देखो इस कंपाउंड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स है, सेकंड कंपाउंड में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, थर्ड कंपाउंड में भी पाई बॉन्ड्स है सिग्मा बॉन्ड्स. फोर्थ कंपाउंड में क्या है कि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अभी ये कार्बोनिल कंपाउंड है, सो इसमें एन टू पाई स्टार पे ट्रांजिशन भी आएगा. इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज हैविंग एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसमें भी देखो ये कंपाउंड जो है इसमें भी ये सल्फर ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देयर आर थ्री काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन. एन मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, देन एन मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फंक्शनल ग्रुप्स. जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, या फिर कीटोन ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो ग्रुप हो गया. तो इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. एंड जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, कॉन्जुगेशन होता है, उसमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. और जो कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, उसमें सिर्फ सिग्मा टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो हाईएस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार. ओके, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है, सबसे कम एनर्जी लगता है एन टू पाई स्टार, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगता है pi 2. So lowest energy n2 pi star, then after that pi 2 pi star, and lowest energy required to for highest energy is required to excite the sigma to sigma star. Is that clear? So again types of electron and characteristic. So sigma electrons, they are present in the saturated compounds. Okay, and do not absorb near but absorb in the vacuum UV. Saturated compound जो होते हैं जिसमें single bond होता है, covalent bond, sigma bond, so they are not absorb UV rays in a 200 to 400 nanometer, but they absorb in the vacuum UV less than 190. So they are present in the saturated compound and do not absorb near but absorb in the vacuum UV. Normally 200 to 400 nanometer में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं होते. सो अगर वेवलेंथ 190 से कम है, इफ देयर इज वेवलेंथ ऑफ लेस देन 190, दैट इज वैक्यूम यूवी, सो इन दैट सिग्मा टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर एक्साइटेड. नाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स, these electrons are present in the unsaturated compound having double bonds or triple bonds, so they are excited in the UV. Again, n type of electron, they are known as a n type of electron, they are known as a non-bonded electrons. They are not involved in the bonding, they are nothing but the lone pair of electrons present on the this kind of atom like sulfur, oxygen, nitrogen and halides. Okay, chlorine, bromine, iodine, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और n electrons. Okay, now types of transition we have seen. Okay, so energy required for excitation of different condition. So यहाँ पे ये याद रखो, क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ चुके हैं. So highest, okay, lowest energy is required for transition of n to pi star transition will require lowest energy. After that pi to pi star, then after that n to sigma star, and highest energy is required for sigma to sigma star. Thus, okay, thus the highest energy is required. Okay, the lowest energy is required for n to pi star, and highest energy is required for sigma to sigma star. You have to remember this. पोलर सॉल्वेंट जो होता है, जैसे पोलर सॉल्वेंट मतलब उसका मतलब ये होता है क्या, आपका वाटर है. So polar solvent water shifts the n to pi star and n to sigma star. ये जो दो ट्रांजिशन होते हैं n to pi star and n to sigma star. So polar solvent shift this transition to a shorter wavelength. Shorter wavelength, that is blue shift. Blue shift क्या होता है? We will see it again. And pi to pi transition to a longer wavelength known as a red shift. तो polar solvent जो होते हैं, if you use polar solvent, that will shift n to pi star transition and n to sigma star transition to a shorter wavelength, means blue shift, and they shift the pi to pi star transition longer wavelength known as a red shift. Types of bands, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. टाइप्स ऑफ बैंड, कौन से ट्रांजिशन में
कौन सा ट्रांजिशन कौन सा बैंड बोलते हैं? टाइप्स ऑफ बैंड्स पाई टू पाई ट्रांजिशन गिव्स राइज टू टू बॉन्ड पाई टू पाई पाई स्टार ट्रांजिशन जिसमें होता है उसमें दो बैंड्स आते हैं फर्स्ट नोन एज अ बी बैंड इज फॉर बेंजोइड बैंड बी फॉर बेंजोइड हो गए सो बी बैंड इज फॉर बेंजोइड बैंड बेंजोइड मतलब क्या बेंजोइड मतलब बेंजीन स्ट्रक्चर ड्यू टू एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम ड्यू टू एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम फॉर एग्जांपल pyridine का स्ट्रक्चर देखो pyridine का स्ट्रक्चर होता है ना ऐसा pyridine का इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं सो इट इज अ हेटेरो एरोमेटिक and aromatic means simple benzene ring due to pi to pi star transition okay one and n to pi star transition both are possible in this okay so they are because of that you get a this kind of band b band means benzoyl band and it is due to aromatic or heteroaromatic compounds okay b band ठीक है then आता है आपका e band means ethylene band e band means ethylenic band e for ethylenic band due to aromatic system मतलब क्या aromatic system मतलब ये ऐसा so ethylene मतलब CH2 double bond CH2 okay CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 इस कंपाउंड में क्या है कि इथिलीन है इथिलीनिक बैंड सो ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन you will get a B band or E band. B band is characteristic for a aromatic structure or heteroaromatic structure and E band that is ethylenic band. Ethylenic band is due to the aromatic structure like ethylene. And then there is one more band known as R band. Then K band. K band is due to pi tas. K band is due to pi star conjugated system. Pi to pi star conjugated system. And there is one more known as R band. R band is due to n to pi star transition. तो क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आता है व्हाट इज बी बैंड इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ ऑप्शन में आएगा ड्यू टू बेंजोइड स्ट्रक्चर और ड्यू टू एरोमेटिक स्ट्रक्चर और हेटेरोएरोमेटिक स्ट्रक्चर or due to ethylenic structure or due to pi to pi star transition or due to ऐसा कुछ आएगा okay? So B for benzoid याद रखो B for benzoid or benzene okay? E for ethylenic bond K band is due to the pi to pi star transition क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है K band is pi to pi star transition then R band due to N to pi star transition this type of band is present or this type of band is seen in the compound where there is a lone pair of electron like if compound has a these heteroatom like sulfur nitrogen oxygen and halide so remember R band is given by the compound which are having heteroatom having lone pair of electron इसके ऊपर lone pair of electron है वो n to pi star transition दिखाएंगे and because of that there is one band in the UV known as a R band due to pi star transition there is a K band and E band is also due to pi star transition but in a ethylenic B band is also due to the pi to pi star transition but in a aromatic ring or benzoid structure or heteroaromatic ring ठीक है तो B band for heteroaromatic ring or benzoid band E band for ethylenic band K band for pi to pi star तो पहले जो तीन है B band E band K band all these three are due to the excitation of pi to pi star but B band benzoid में आता है बेंजीन स्ट्रक्चर में आता है तो देखो जैसे B band जो है if you obtain a UV of aromatic or heteroaromatic compound you will get a B band but same compound if you place in the acidic solvent and after that scan that okay in UV so there is a loss of this band जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर होता है pyridine में तो जब एसिड में जाएगा pyridine तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा और वो बैंड उसमें डिसअपियर हो जाएगा so B band is a particular characteristic of your benzoid structure or aromatic structure or heteroaromatic structure so when you place that compound in acidic solution so B band will be lost E band is a characteristic of ethylenic band K band is due to pi to pi star and R band is due to n to pi star क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ चुके हैं इंपॉर्टेंट है नाउ अगेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग द again same thing electronic transition involving the n sigma and pi electrons in a molecular orbital so पहला for example sigma to sigma star requires highest energy and found in the saturated compound we have seen this now for the excitation of the sigma to sigma star electron
you need a vacuum UV that is less than 200 nanometer. So example कौन से compound में आएगा ये pi to pi star for example जो आपका सिग्मा बॉन्ड है सी सी कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड that is a sigma type of bond. So in case of sigma bond there is a sigma kind of electrons and for excitation of sigma you need a more energy because sigma bond is the strongest. That's why so this band is observed at the lower wavelength below the UV layer. UV का range क्या है 200 to 400 nanometer. So less than 200 मतलब vacuum UV. So sigma to sigma star transition is observed in the vacuum UV. Then again N to sigma star transition. So they are found in the saturated compound containing hetero atom. जैसे होगा CH3CH2OH. So in that you will find this N to pi star transition. So it is observed in the range in the wavelength range of 160 to 260 nanometer. For example, OH2 water, H2O water, methanol, then methyl chloride. So they will give you N to pi star transition. Then pi to pi star transition are found in the unsaturated conjugated compound. So you will they will absorb UV rays that is a 200 to 400 nanometer or 200. So these kind of compounds like carbon carbon double bond, carbon oxygen double bond, carbon nitrogen double bond, carbon carbon triple bond. Then N to pi star transition requires lowest energy and this kind of transition is observed in case of ketone, okay, amine, nitrile, nitro group, etc. They are they observe in the range of 2 to 600 nano. They require lowest energy. देखो यहाँ पे हाई लोएस्ट ओके हाईएस्ट एनर्जी लगता है सिग्मा को लोएस्ट एनर्जी लगता है एन टू पाई ट्रांसफॉर्म. Now there are terms what is meant by chromophore and what is meant by auxochrome. Okay, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है. Chromophore क्या होता है? Chromophore is any isolated covalently bonded group that show a characteristic absorption in the UV region. For example, ethylene, acetylene containing pi electron. नाइट्रो ग्रुप होता है, एस्टामिडो ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. इसका मतलब ये है कि ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज नोन एज अ क्रोमोफोर. बट उसमें क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड्स होना चाहिए. एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप CH2 CH3 OH. बीच में जो OH है इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड. ओके, CH2 CH3 NO2 नाइट्रो ग्रुप वो क्या है कोवेलेंटली बॉन्डेड. सो दिस काइंड ऑफ groups responsible for the absorption of UV rays they are known as a chromophore. Chromophore क्या है? Chromo मतलब color, phore मतलब एक entity or species. So species responsible for the absorption of UV rays known as a chromophore. Chromophore क्या है? Ethylene CH2 double bond CH2, acetylene CH3, okay, CH3 CH2 double bond CH2 acetylene हो गया ethylene acetylene. Then nitro group, acetamido group, carbonyl group, carboxyl group. These are known as chromophores. Okay, chromophores is the main which is responsible for the absorption of UV rays. Now auxochrome. Auxochrome क्या होता है? Any group which does not itself act as a chromophore, but when presence of it brings about the shift of absorption maxima towards the longer wavelength. मतलब क्या? ये एक ऐसा ग्रुप रहेगा जो खुद एब्सॉर्प्शन के लिए यूवी रेज एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ईथर ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, थायोल ग्रुप. So these groups they themselves does not absorb the UV rays, but if they are present in the molecule, they will increase the lambda max of that compound to a higher wavelength. So any group that does not itself absorb the acts as a chromophore, whose presence in the chromophore brings about the shift of absorption maxima towards the longer wavelength of the spectrum is known as a auxochromes. तो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है आपको कि auxochrome क्या है, chromophore क्या है. Are you getting or what is meant by auxochrome? What is meant by chromophore? Yes. Okay. Chromophore means what? Chromophore means any isolated covalently bonded groups in the compound that show a characteristic absorption of UV light or UV rays. For example, ethylene, acetylene containing pi electron. Then nitro group, acetamido group, carbonyl group and carboxyl group. ये ग्रुप क्या है कि वो कंपाउंड के साथ में बॉन्डेड होते हैं कोवेलेंटली एंड they are responsible for the absorption of UV rays, okay, and will show characteristic absorption. Now auxochrome क्या होता है? Auxochrome also they are certain kind of groups, but themselves they will not act as a chromophore. ठीक है, themselves they will not act as a chromophore, but
बट इफ दे आर अटैच टू ए क्रोमोफोर, अगर क्रोमोफोर है उसको अटैच है वो, तो वो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा बढ़ाएंगे उसका. So auxochrome is a group which does not itself act as a chromophore, but whose presence bring about the shift of absorption maxima towards the longer wavelength of the spectrum known as a auxochrome. For example, hydroxyl group, ether, amino, thiol, etc. ये जो ग्रुप है ये खुद क्रोमोफोर नहीं है, ये सपोर्टिंग ग्रुप्स है. क्या है? सपोर्टिंग. दे विल सपोर्ट, मतलब भांडण झाल्यानंतर असतं ना, काही मित्र असतात भांडण झाले, भांडण चालले, काही तुमचा एक मित्र असतो जबरदस्त, तो भांडण लागला का, ए चल बाजूला, काही तो येणार लगे पुढे मारामाऱ्या करायला. ठीक आहे, म्हणजे तो झाला क्रोमोफोर. ठीक आहे, पण काही मित्र असतात ते काय करतात, फक्त जो पुढे गेला ना मारामाऱ्या करायला त्याला फक्त पाठीमागून सपोर्ट करतात. हा चल 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 तू पुढे, मी आहेच माग, चल मी आहे पुढे. तसं ते ते क्रोमोफोर काय, दी आर द ओरिजिनल ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द absorption of UV rays. Okay, now auxochrome, they are the supporting groups, so themselves they are will not absorb the radiation, but if they are present along with the chromophore, so they will increase the absorption maxima towards the longer value. Now photometer, we have seen what you mean of photometer. Photo means light, meter means measurement. So measurement of intensity of light. Okay, so instrument which measures the ratio of the sum of function of two radiant power of two electromagnetic beams having three filters and isolate a narrow region, and photocell or photomultiplier tube will be the detector which measures the intensity of radiation. Now spectrophotometer means what? Spectrophotometer is the instrument to measure the ratio of function of two radiant electromagnetic beam over a large wavelength region. Monochromators are used in this spectrophotometer instead of filters. तो फिल्टर्स फोटोमीटर में यूज करते हैं, जैसे कलरीमीटर होता है आपका, उसमें फिल्टर यूज करते हैं. एंड उसमें ओके, एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं, बिकॉज मोनोक्रोमेटर्स दे आर मोर एक्यूरेट in isolating the particular wavelength as compared to filters. We have seen in the last session. Now colorimeter instrument used to measure the absorption in the visible region is the colorimeter. Colorimeter क्या होता है कि if you want to measure the absorption of light in the visible region क्या होता है 400 to 800 नैनोमीटर. ठीक है, रेंजेस याद रखो. यूवी का रेंज होता है 200 to 400 नैनोमीटर, विजिबल का होता है 400 to 800 नैनोमीटर. So colorimeter, it operates in the visible region and it is the less accurate instrument colorimeter. उसमें फिल्टर्स होते हैं, उसमें मोनोक्रोमेटर्स नहीं होते. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वो मोर एक्यूरेट होता है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है. कलरीमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बाय कलर्ड कंपाउंड. Spectrophotometer is used for the measurement of absorption of UV light by non-colored compound. Absorption characteristic of common filters colorimeter ये ऑलरेडी हो चुका है अपना. येलो कलर, okay, absorption approximate range of the absorption band in the micrometer 450 micrometer. ये orange 500 micrometer, red 570, पर्पल 450 to 650 माइक्रोमीटर में एब्सॉर्ब करेगा. ये ऑलरेडी कल आपने देखा है. ग्रीन फिल्टर 400 to 475 माइक्रोन का लाइट एब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, वो है. समरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड ट्रांजिशन ये ऑलरेडी होता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है. सिग्मा बॉन्ड, उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है. तो उसके लिए वेवलेंथ कितना लगता है, लेस देन 190 नैनोमीटर. सो वैक्यूम में भी 135 नैनोमीटर. एग्जांपल क्या है, इथेन CH3CH2. ये मॉलिक्यूल जो CH3CH2 इथेन, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होगा. वो दैट रिक्वायर हाईएस्ट एनर्जी, and that's why I have already told you in the last session, more will be the wavelength of light, less will be the energy. Less will be the wavelength of light, more will be the energy. More will be the wave number of light, more will be the energy of light. Okay, now second ट्रांजिशन होता है n2 सिग्मा स्टार. n2 सिग्मा स्टार, सो उसका एग्जांपल होता है वाटर H2O. दूसरा है अगेन n2 sigma star n butyl iodide. ठीक है, pi type of electrons they are present in the conjugated state. Pi to pi star transition that occurs in the UV region 165 to 165 nanometer. Example is ethylene CH2 double bond CH2. N and pi electron structure. N and pi electrons का आप मिलता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का आप मिलता है. N and pi star transition. So pi to pi star transition
एग्जांपल उसका एसीटोन n2 सिग्मा स्टार एंड पाई 2 पाई स्टार n2 पाई स्टार n2 सिग्मा स्टार n2 सब टाइप के ट्रांजिशन होंगे इसमें एसीटोन में. Now there are two terms. What is meant by bathochromic shift? What is meant by red shift? What is meant by blue shift? What is meant by hypsochromic shift? What is meant by Scoville shift? First one is a bathochromic shift. Question इसके ऊपर भी आ चुका है. What is meant by bathochromic shift? So also known as a red shift. Bathochromic shift is also known as a red shift, and it is nothing but the shifting of absorption maxima towards the longer wavelength due to presence of auxochrome or by changing the solvent bar or by increasing the conjugation. तो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होता है, ये जो नए वाले हैं उनको मैं बोलता हूँ. ऑलरेडी वी हैव सीन व्हाट इज बाय एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा. जैसे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है. यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस. एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट अपन ने डाला है. सो आपके सैंपल ने अगर ऐसा कुछ पिक आया उसका, सो मतलब क्या, यहाँ से एब्जॉर्बेंस जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, यहाँ से एब्जॉर्बेंस बढ़ते 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 यहाँ पे हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस दिखा है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा. ओके, हाईएस्ट एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ known as a absorption maximum. So what is meant by bathochromic shift? Bathochromic shift is nothing but the shifting of absorption maxima of the compound, okay, towards the longer wavelength. It is known as a bathochromic shift or blue or red shift. Bathochromic shift, also known as red shift, shifting of absorption maxima towards the longer wavelength, and it is due to presence of auxochrome. Auxochrome है तो वो longer wavelength दिखाता है ना. जो क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर के साथ में अगर एक्सोक्रोम लग गया तो एक्सोक्रोम क्या करेगा, इट विल शिफ्ट द टोटल वेवलेंथ ऑफ दैट टोटल एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ. मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसका एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा है कहाँ पे, 275 नैनोमीटर पे. अगर उसमें अपन ने ऑक्सोक्रोम डाल दिया तो उसका एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा 300 नैनोमीटर. तो एक कंपाउंड है, उसका एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा आता है आपका 275 नैनोमीटर पे. मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन शोन बाय कंपाउंड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज नथिंग बट द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम. तो एक कंपाउंड एब्सॉर्प्शन दिखाता है सबसे ज्यादा एक वेवलेंथ के, उसकी एक वेवलेंथ के ऊपर पर्टिकुलर, उसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम. अगर उस कंपाउंड में ऑक्सोक्रोम डाल दिया आपने, ऑक्सोक्रोम, या फिर उस कंपाउंड में और कुछ कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड ऐड कर दिए, so that will shift the absorption maximum from 275 to 300. Okay, and this shift is known as a bathochromic shift or red shift. That is nothing but the shifting of absorption maxima towards the longer wavelength due to presence of auxochrome or change in the solvent or polarity of solvent and increase in the conjugation. That is a bathochromic shift. Question आता है. Now another shift is known as a hypsochromic shift or also known as a blue shift. सेकंड आता है hypsochromic shift. पहला होगा आपका bathochromic shift. बातो मतलब longer wavelength, hypsochromic shift मतलब shorter wavelength. So also known as blue shift, shifting of absorption maxima towards the towards the shorter wavelength. It is due to removal of conjugation or change in the polarity of solvent. ठीक है. तो मान लीजिए कि एक कंपाउंड है आपके पास XYZ नाम का, तो वो उसका एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा है 275 नैनोमीटर पे. अगर उसमें आपने कॉन्जुगेशन ऐड कर दिया और मतलब डबल बॉन्ड ऐड कर दिए, ओके, या फिर सॉल्वेंट का चेंज किया, या फिर ऑक्सोक्रोम लगा दिया, इट्स एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा विल बी शिफ्टेड टू 300 नैनोमीटर. दैट इज नोन एज अ बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट. सो शिफ्टिंग ऑफ एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. ओके, रेड शिफ्ट और बाथोक्रोमिक शिफ्ट. ठीक है. अभी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या है, शिफ्टिंग ऑफ एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. ठीक है. अभी बढ़ रहा था तो ये कम होगा. सो ड्यू टू रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, जो एक कंपाउंड है उसमें कॉन्जुगेशन ऑलरेडी है, आपने वो क्या किया, डबल बॉन्ड्स रिमूव कर दी, तो उसका एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा कम हो जाएगा. इट विल शिफ्ट टू ए शॉर्टर वेवलेंथ. सपोज एक कंपाउंड है, उसका 275 के ऊपर एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा है, तो उसका कॉन्जुगेशन आपने निकाल दिया. सो व्हाट विल हैपन, द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा व्हिच इज नॉर्मली एट 275 विल बी शिफ्टेड टू 250 और 200. So that is nothing but the hypsochromic shift or blue shift. So shifting of absorption maxima towards the longer wavelength is known as a bathochromic shift or red shift. Shifting of absorption maxima, okay, towards the shorter wavelength is known as a hypsochromic shift or blue shift. Question आता है इसका. Hyperchromic shift, hyperchromic shift, okay, or hypochromic shift. Hyperchromic shift and hyperchromic shift. Again, these are two terms. Hyperchromic means
increase in the intensity of absorption in the absorption maximum. Increase in the intensity of absorption is known as a hyperchromic shift, and a hypochromic shift is the decrease in the intensity of absorption max absorption. ठीक है, यहाँ पे देखो पहला है हाइपरक्रोमिक, यहाँ पे हाइपरक्रोमिक है, ये जो है ये हाइपोक्रोमिक है। यहाँ पे हाइपोक्रोमिक मीन्स decrease in the intensity of absorption, hyperchromic means increase in the intensity of absorption. Extinction or absorbance of 1% weight by volume solution by using 1 centimeter part length sampling cell. Okay, extinction coefficient or absorbance of 1% weight by volume solution, okay, at a particular wavelength in a 1 centimeter part length sampling cell is a characteristic of particular compound. इट इज E1% 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरास्टामोल है, मान लीजिए पैरास्टामोल का एक्सटेंशन कोएफिशिएंट अगर है, जैसे मान लीजिए उसका 5 है, ओके, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, तो 1% solution of paracetamol weight by volume solution, if you scan this in UV having path length of 1 centimeter sampling cell, so it will give you particular absorption। जैसे मान लीजिए कि ये absorption दिखा रहा है 5.19 ऐसा, आपने मेजर किया औरंगाबाद में, तो आप उधर गए यूके में, यूके में पैरास्टामोल लिया, वहां पे उसका सॉल्यूशन बनाया 1% weight by volume solution, एंड अगेन यूवी में मेजर किया बाय यूजिंग 1 सेंटीमीटर पार्ट लेंथ, वहां पे भी उतना ही आना चाहिए 5.19। so it is a characteristic of particular compound, so E1% 1 centimeter, that is known as a molar extinction, it is known as the extinction coefficient of particular, known as the extinction coefficient of particular compound, that is a characteristic property of compound, and that is used for the quantitative purpose, तो quantitative purpose के लिए उसको, okay? So sampling cell, these you, okay, you can see over here, these kind of sampling cells they are present in the UV, UV में ऐसे sampling cell होते हैं, इसको बोलते हैं कवेट्स, CUVETT, कवेट्स, CUVETT, कवेट्स। So कवेट्स they are made up of कॉर्ड्स मिलके, कॉर्ड्स से बनते हैं, QUARTZ, क्वार्ट्ज से बनता है, ग्लास से नहीं बनता। ग्लास absorb the UV radiation, that's why the sampling cell they are made of quartz, okay, and they are known as matched type sampling cell। मैच टाइप मतलब ये दोनों सैम्पलिंग सेल जो है वो उसका डायमेंशन सेम रहेगा, उसका मटेरियल सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। सो ओके, सो वन साइड ऑफ दिस सैम्पलिंग सेल, ओके, दिस इज नोन एज अ रफ साइड, ये जो साइड है रफ साइड है, एंड दिस वन इज नोन एज स्मूथ साइड। ये जो है यहाँ से रेज पास होंगे, यहाँ पे इसके अंदर सैंपल रहेगा आपका सॉल्यूशन, रेज यहाँ से पास होंगे, दूसरे साइड से निकल जाएंगे, यहाँ से नहीं पास होंगे। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बीम यहाँ पे है, एक बीम यहाँ पे है। यू कैन मेजर द साइमल्टेनियसली द एब्सॉर्प्शन ऑफ सैंपल एज वेल एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड। यहाँ पे रेफरेंस स्टैंडर्ड रख दो, सॉल्यूशन रेफरेंस स्टैंडर्ड, यहाँ पे सैंपल रख दो, इंस्ट्रूमेंट चालू करो, आप पर्टिकुलर वेवलेंथ सिलेक्ट करो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सिलेक्ट करो यहाँ से, या कंप्यूटर से एब्सॉर्प्शन मेजर करो। कोई सैंपल का एब्सॉर्प्शन पहले क्या था कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर थे, तो उसमें क्या है कि आपको सिर्फ पहले स्टैंडर्ड का मेजर करो, फिर स्टैंडर्ड का मेजर करो, उसके बाद नोट करो, फिर सॉल्यूशन फेंक दो दूसरा कवर्ट में, स्टैंडर्ड सैंपल का भरो, फिर मेजर करो, तो ये एक ही चीज दो बार करना पड़ता था। यहाँ पे वो दो साइमल्टेनियसली मेजर करेंगे, ठीक है, सैंपल का भी और स्टैंडर्ड का भी, सो रेफरेंस स्टैंडर्ड प्लस सैंपल, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। So single beam spectrophotometer, if you have to measure the sample of, you have to measure the absorbance of sample and blank separately, and it is a time consuming process, less accurate, tedious process, and it is primarily used for the visible region। ठीक है, single beam spectrophotometer, so इसका example है Spectronic 20 Beckman model DU2। okay, problem with the single beam system is that it is measure the total amount of light reaching to a detector rather than the percentage absorbed। अगर ब्लैंक रखेंगे तो ब्लैंक टोटल आएगा, उसका टोटल आएगा, ब्लैंक में कुछ नहीं होता है, तो ब्लैंक में पूरा मेजर होगा। और सैंपल में क्या होगा, सैंपल में कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब होंगे, तो वो मेजर नहीं करता सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर, वो सिर्फ ट्रांसमिटेड रेडिएशन मेजर करता है,
डबल बीम में क्या होता है, एक साइड पे ब्लैंक रहता है, एक साइड पे स्टैंडर्ड रहता है, तो ये भी वही मेजर करता है, लेकिन ब्लैंक होने के कारण ये कैलकुलेट करके ऑब्जर्वेंस दिखाता है आपको। ओके, नाउ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर साइमल्टेनियसली two beams measure the observance of sample as well as blank and has a certain advantage over the single beam and most widely used nowadays and more accurate.